Good morning, student. Class 12th. Next topic, Chapter 4, NCERT Determinants. So, in this chapter, we will discuss about the determinant and what is the basic difference between the matrix and determinant. So in previous chapter we discussed that when we have given some elements likewise a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 and a33, then the representation of these elements in some row and column is known as matrix. Now the next topic is determinant. So what is the basic difference and between the matrix and determinant? So matrix is a simple representation of the given elements in some rows and some columns. Meanwhile, the determinant is defined of any square matrix and every determinant is associated with a real number. So basic difference between the matrix and determinant is simply we can say that the matrix is the representation of given element in some particular row and column. Meanwhile, the determinant is a number which can be associated with a given square matrix. So, first of all, we will discuss about the determinants. So let we have given a system of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. These are the two linear equation in variable x and y. Then this can be also written as a1x plus b1y is equals to of minus c1 and a2x plus b2y is equals to minus c2. If we have to express this system of linear equation in matrix representation, then we can write as capital AX is equals to B, where A is the coefficient matrix, X represent the variables X and Y, and the B represent the vector quantity minus C1 minus C2 or plus C1 C2. So we can express this system of linear equation as A1 B1 A2 B2, that is coefficient matrix of the variable xy, and the variable can be written as x comma y, and it will be equals to minus of c1 minus of c2. So this is the matrix representation of the given system of linear equation in variable x and y. Now the solution of this given system of linear equation will unique if we know that a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, that is if a1 b2 minus of a2 b1 is not equals to 0. So the uniqueness of this system of linear equation in variable x and y will exist only if a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 or a1 b2 minus a2 b1 is not equals to 0. Then this a1 b2 minus a2 b1 is known as the determinant of this given square matrix of order 2 cross 2.
So this was about the determinant. Now we will find the determinant of a square matrix of order 1 cross 1, then the determinant of the square matrix of order 2 cross 2, and then the determinant of the square matrix of order 3 cross 3. So how we will represent the determinant and how we will find the determinant. So let us suppose A be the any given. So first, determinant of a square matrix of order 1 cross 1. So let A be the any given square matrix A having element, let us suppose 3, of order 1 cross 1. Then the determinant of this square matrix A will be represented by determinant A. This one is not read out as modulus of A. This one is read out as these two vertical line is the symbol of the determinant of square matrix A. So this one is read out as determinant of square matrix of A, or sometime we represent this by delta also, or sometime we will represent this by DETA. So in word form DETA, delta, or this one. These are the three symbols of the determinant of square matrix, and the determinant of the square matrix of order 1 cross 1 is always equals to the given element. So this one is the determinant of a square matrix of order 1 cross 1. Now the determinant of the square matrix of order 2 cross 2. So when we have given square matrix of order 2 cross 2, then how we will find its determinant and how we will represent. So first of all, let A be the any given square matrix. Let us suppose in compact form A11, A12, A21 and A22. This be the square matrix of order 2 cross 2. Then the determinant of this square matrix A can be represented as determinant A or delta A. These are the three symbol of representation: determinant A, or this in absolute form, but it will never read out as absolute of A. This one is read out as determinant of the square matrix A, or sometimes we represent by delta also. So the determinant of this square matrix will be equals to, we will write simply in this form, determinant. So A11, A12, A21 and A22. Now if the given square matrix is of the order 2 cross 2, then its determinant will be represented by this format. We will write the element as it is form, and this is the symbol of the determinant of a given square matrix. Now if the given square matrix is of the order 2 cross 2, then its numerical value will be equals to, so determinant A or delta A will be equals to, what we will do, how we will find the numerical value. So always remember, this one is known as principal diagonal and this one is known as off diagonal. So first we will multiply the element A11 and A22, that is the element along with the principal diagonal. Principal diagonal this, and the remaining diagonal is off diagonal. So we will multiply the element lies along the principal diagonal. So A11 into A22, what you have to do? Multiply the given element as it is. Whatever the sign of A11 and A22, you have to multiply and put in the brackets. Then you have to put the minus sign, start the bracket and multiply the element which lies in off diagonal, that is A21 and A12. Whatever the sign of A21 and A12, multiply, write in the brackets, and
here this is the minus sign, most important. If the multiplication of these two element is negative, then negative will be positive. So whatever the elements are given, first multiply the principal diagonal element, put in the bracket, then multiply the off diagonal element and put in the brackets and solve this expression. Whatever the value we will find out, that will be the determinant of a square matrix of order 2. So in this way we will find the determinant of a square matrix of order 2. So now the next topic is determinant of a square matrix of order 3 cross 3. So let us consider a square matrix of order 3 by 3. So now 3 cross 3. So let A be the given square matrix of order 3 cross 3, then let the given square matrix be A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. This is the compact form of the given square matrix of order 3 cross 3. Now the determinant of this square matrix of order 3 by 3 can be calculated in 6 ways. How? The first way, we can find the value of this square matrix determinant with respect to row 1, with respect to row 2 or with respect to row 3. Similarly, we can expand this square matrix determinant with respect to column first, column second or column third. Whatever we will do with respect to any row or with respect to any column, its numerical value will be always remain same. So first of all, the determinant A will be equals to, just you have to express in determinant form. So A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 and 33. This is the determinant of a square matrix A of order 3 cross 3. Now on expanding it with respect to R1, रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट अगर अपन इसका एक्सपांसन करें तो इसका एक्सपांसन कैसे होगा? सो डिटरमिनेंट ए विल बी इक्वल्स टू रो फर्स्ट, ये आपका रो फर्स्ट है R1 के रेस्पेक्ट जब अपन इसका एक्सपांसन करेंगे तो सबसे पहले अपन एलिमेंट लेंगे A11 को एज इट इज वॉट एवर द साइन ऑफ A11 वी विल राइट एंड वी विल राइट ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. सो यहाँ जो डिटरमिनेंट आएगा 2 क्रॉस 2 का वो क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट अपन इसका एक्सपांसन कर रहे हैं उसकी पोजीशन देखिए कि वो कहाँ लाइज कर रहा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाइज कर रहा. तो A11 जिस रो और कॉलम में लाइज कर रहा है उन सब एलिमेंट को छोड़ना, दैट इज हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट है दीज A22, A23, A32 and A33, we will find the determinant of these 4 element, that is determinant of 2 cross 2. So 2 cross 2 का डिटरमिनेंट अभी अपन ने सीखा था कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, उसमें से ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को सबसेट कर दे. सो दिस विल बी द एक्सपांसन ऑफ दिस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट. नाउ लेट अस टेक सेकंड एलिमेंट, बिकॉज अपन पहली रो के रेस्पेक्ट एक्सपांसन कर रहे हैं तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है A12 का जो भी साइन है आपको एज इट इज लिखना है और इसके पहले माइनस साइन लगाएंगे A12 के, बिकॉज A12 का पोजीशन है ओड और किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट एक्सपांसन में उसके पहले साइन कैसा आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन -1 रेस्ट टू द पावर सम ऑफ द इट्स पोजीशन इन रो एंड कॉलम. दैट इज अगर ये IV रो और JV कॉलम में लाइज कर रहा है तो उसका पहले साइन आएगा -1 रेस्ट टू द पावर I प्लस J. अगर I प्लस J का सम ओड है तो यहां पर -1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3.
सो पावर अगर ओड है तो माइनस साइन आएगा, और -1 रेज़ टू द पावर I प्लस जे अगर इवन है देन इट विल बी पॉजिटिव। सो द साइन विथ बिफोर A12 विल बी माइनस, और उसका कारण बताया कि A12 नेगेटिव पोजीशन पे है, दैट इज ओड पोजीशन पे है। सो सिंपली आपको क्या करना है, उसकी रो और कॉलम की जो पोजीशन है उनके स्पीस को आप ऐड करके देख ले। अगर ओड आ रहा है तो उसके पहले माइनस साइन, और इवन आ रहा है तो प्लस साइन। नाउ -A12 एंड नाउ A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2/2 ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट, वो कैसे निकालेंगे। तो A12 लाइज कर रहा पहली रो और दूसरे कॉलम में, तो पहली रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को छोड़ने पर जो बचे हुए एलिमेंट हैं A21, A23, A31 एंड A33, दिस विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का डिटरमिनेंट फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड सब्सट्रैक्ट द ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट। नाउ द लास्ट थर्ड एलिमेंट A13, सो वी विल टेक A13 और इसके पहले प्लस साइन, बिकॉज इसकी पोजीशन का सम जो है 1 + 3 दैट इज इवन है, तो इवन के पहले प्लस साइन। नाउ A13 कहाँ लाइज कर रहा, पहली रो और थर्ड कॉलम में। सो पहली रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को अपन क्या करेंगे, लिव आउट कर देंगे, तो रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट हैं, इनका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो A21, A22, A31 and A32. So on expanding with respect to first row, the expansion will be in this way. Now how we will calculate this? So element A11 as it is है, and principal diagonal element A22 into A33 minus of diagonal element that is A32 into A23. So this one is the first numerical value, then minus A12 into principal diagonal element multiplication, so A21 into A33 minus of diagonal element, so A31 into A23, then plus of A13 into principal diagonal element multiplication A21 into A32 minus of diagonal element, so A31 into A22. So in this way, on expanding with respect to first row, we can find the value of a determinant of order 3x3 or determinant of a square matrix of order 3x3. Now we will take some examples on the basis of second order and third order. So first, if we have to find question, so application of a determinant of a square matrix of order 2x2 and 3x3. So first question, evaluate the determinant of 2, 4 minus 1, 2. So this is the determinant of order 2x2. So let determinant A is equals to 2, 4 minus 1, 2. How we will calculate? First we will multiply the principal diagonal element. So here principal diagonal element are 2 and 2. So 2 multiplied by 2 minus of diagonal element minus 1 into 4. So determinant A will be equals to 2 cross 2 4 minus of minus 4. So it will be equals to 4 plus 4, that equals to 8. So the determinant of any square matrix can be expressed or associated with any real number. Next question, evaluate question number 2,
The given determinant is x, x plus 1, x minus 1 and x. So it is also a determinant of order 2 cross 2. So let the determinant be A, implies that determinant A will be equals to multiply the principal diagonal element, that is x into x, x square minus of diagonal x minus 1 into x plus 1. So x minus 1 into x plus 1. So a minus b into a plus b, that is a square minus b square. So it will be x square minus of x square minus 1. On opening, determinant a will be x square minus x square plus 1. So x square will be cancelled out. So remaining is 1. So determinant a is equals to 1. Again see, every square matrix can be associated with a real number or a complex number. So this is the real number. So this was about the how we will find the determinant of order 2 cross 2. Now we will do some question on the basis of determinant of order 3 cross 3. So let determinant A is equals to 1 2 3 minus 1 3 0 4 1 0. So this is the determinant of order 3 cross 3. Now we can evaluate the value of this determinant or determinant. Determinant is itself any numerical value or we can associate with a number. So we can expand this determinant with respect to first row, second row, third row or first column or second column or third column. But we have to write here ki with respect to which particular row we are finding its value. So let us suppose if we have to expand it with respect to third column, then how we will write? So on expanding with respect to column 3. So how we will take? First element of column 3 is 3 3. So determinant A will be equals to 3 into determinant of those elements which not lies in third column and first row, because जो element 3 है वो first row और third column में है. So leaving this, the remaining determinant will be minus 1 3 4 1. Similarly with respect to 0, so its position is 2 3, so sign will be minus 0 into. अब ये जिस रो और कॉलम में लाइज कर रहा है उनको छोड़ना. सो रिमेनिंग डिटरमिनेंट विल बी 1 2 एंड 4 1. देन विथ रेस्पेक्ट टू दिस 0, सो इट्स पोजीशन इज इवन बिकॉज a 3 3. सो प्लस 0 इनटू. आप देखिए 0 कहाँ लाइज कर रहा है? 3 3 में. सो अपन थर्ड कॉलम और थर्ड रो को लीव करेंगे. सो रिमेनिंग एलिमेंट आर 1 2 माइनस 1 3. हियर सी, किसी भी एक रो या कॉलम के अगर दो एलिमेंट 0 हैं तो उसके रेस्पेक्ट एक्सपांशन हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू 0 देगा. बट समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा. नाउ 0 इंटू वॉट एवर द वैल्यू ऑफ इट विल बी टोटल 0 एंड हियर ऑल्सो 0 इंटू समथिंग it will be 0. So only we have to expand with respect to this. So determinant A will be equals to 3 into minus 1 into plus 1, that is minus 1 into plus 1 minus 1 minus of 4 into 3, that is 12. So it will be equals to determinant A will be equals to 3 into minus 1 minus 12, that is minus 13. So it will be 3 into minus 13, that will be equals to minus 39. So the determinant of this on expanding with respect to third column is minus 39. Let us take one more example.
let the given square matrix A is 0 sin of alpha minus cos of alpha minus sin alpha 0 sin of beta cos alpha minus sin of beta and 0. The given square matrix is of order 3 cross 3. So its determinant, how we will represent its determinant? So determinant A or DETA or delta. These are the three representation of the determinant of given square matrix A of order 3 cross 3. And it can be written as determinant just in symbolic form. So 0 sin alpha minus cos alpha minus sin of alpha 0 sin of beta and cos of alpha minus sin of beta and 0. So this is the determinant of a square matrix of order 3 cross 3. Now we can find the value of this determinant on expanding with respect to any row or any column. So on expanding with respect to R1 रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट अपन इसका एक्सपांशन कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू रो फर्स्ट का पहला एलिमेंट लेंगे 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट से. सो वो 2/2 ऑर्डर का कौन सा डिटरमिनेंट होगा? 0 जिस रो और कॉलम में लाइज कर रहा है उनके एलिमेंट को छोड़ करके रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट. सो 0 साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा एंड 0. देन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड एलिमेंट, सो दिस इज साइन अल्फा. साइन अल्फा का पोजीशन है A12 ओड पोजीशन, सो इसके पहले माइनस साइन आएगा. Now minus sin alpha into determinant of those element which not lies in first row and second column, because sin alpha कहाँ लाइज कर रहा है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में. तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर माइनस ऑफ साइन अल्फा, साइन ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा एंड 0. Then with respect to third element of first row, so third element of first row is minus of cos alpha into. Now cos alpha का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को लीव आउट करके रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट. सो इट विल बी माइनस ऑफ साइन अल्फा 0 cos of alpha and minus sin of beta. Now on expanding this determinant of order 2 cross 2, so here determinant A is 0 into, देखिए 0 into मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे? सो 0 into क्या करेंगे? 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई, तो 0 into 0 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ डायगोनल साइन बीटा into minus sin beta, so minus sin square beta, so it will be plus sin square beta, but finally it will be equals to 0 because coefficient is 0. Then minus sin alpha into minus sin alpha principal diagonal element minus sin alpha into 0 0 minus of cos alpha into sin beta, so it will be cos alpha into sin of beta, so sin will be minus. Then last is minus cos alpha into principal diagonal element minus sin alpha into minus sin beta, so minus minus plus sin of alpha into sin of beta, minus cos alpha into 0, so minus of 0. So now finally how we will solve this? So here see, first determinant A will be equals to first element is 0, second minus sin alpha into minus cos alpha sin beta. So now we will write R1
will be equals to this way and R3 equals to this way, and R2 is as it is. So using these two applications or elementary row transformation, R1 will be equals to 1 0 minus 1 minus 2 1 0. R2 is as it is, so 0 1 2, here in right hand side 1 0 0, and R3 will be 0 0 2, so 0 0 2, and here 5 minus 3 and 1. So this is your left hand side, this is right hand side, and into A. So applying these two, now we are at this situation. Now see in third column, the A13 is minus 1, which we have to make 0, and A23 also 2, and it should be also equals to 0. So first of all, what we have to do, first we have to make this one as 1, and then we have to make this one to 0 and this one equals to 0. So it will be convert into identity. So in R3 इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. सो नाउ आर अप्लाइंग R3 टेंड्स टू R3 इंटू 1/2. सो R3 इंटू 1/2 मतलब R3 को अपन ने थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया. तो सबसे पहले अपन R3 को लिख लेंगे 0 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, इन राइट हैंड साइड ऑल्सो 5/2 minus 3/2 and 1/2 into A. So this we applied, and now remaining 2 as it is. So remaining 2 as it is means this will be, first row will be as it is. So 1 0 minus 1, this will be minus 2 1 0, and second row 0 1 2, and in right hand side 1 0 0 into A. So this is the next step. Now see what we have to do. Here A, this one is A33 is 1. So this element should be equals to 0 and this should be also equals to 0. So same application क्या करेंगे, जहां 1 है और जहां 0 बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, जहां 0 बनाना है उस वाले एलिमेंट को जिस रो में हमने 1 बनाया उससे मल्टीप्लाई करके उसी में से माइनस करना है. सो नाउ अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3. R3 को मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूंगा. सो माइनस और माइनस प्लस, अगर नेगेटिव साइन है 1 है तो सिंपल ऐड करना है. सो 1 -1 ये 0 हो जाएगा. एंड सिमिलरली R2 टेंड्स टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3. क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि R3 में 1 है और 0 बनाना 2 की जगह. सो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा R3 से और R2 में से घटा दूंगा. सो फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू रो 1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 3 को ऐड कर रहे हैं. सो R1 प्लस R3, देखो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 ये 0 बन जाएगा इन लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या होगा, -2 प्लस 5/2. सो -2 प्लस 5/2 व्हाट विल बी दिस, -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 का मतलब 1/2. देन 1 minus 3/2 that is -1/2, and 0 plus 1/2 that is 1/2. So this one is R1 plus R3. Now R3 आपको एज इट इज रखना है, तो R3 को अपन पहले लिख लेते हैं 0 0 1. राइट हैंड साइड में ऑल्सो 5/2 -3/2 and 1/2. Now what we have to do, R2 में से ट्वाइस ऑफ R3 को घटाना है. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहां लिख लेता हूं R2 क्या है आपका, R2 है 0 1 2, और इधर है R2 1 0 0. इसमें से घटाना है ट्वाइस ऑफ R3 को.
तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, R3 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 2, यहाँ 5/2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 5, माइनस 3 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू -3 एंड 1/2 इंटू 1 दैट विल बी 1। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपल आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 5, 1 minus 5 minus 4, 0 minus or minus 3 that will be plus 3 and 0 minus 1 minus 1. Write these in second row. So 0 1 0, here will be minus 4 3 and minus 1. See, at this stage see, the left side matrix is converted into the identity matrix, then I is converted into this. So it will be equals to, implies that, how we will write? Now implies that identity is equals to any given matrix into A. This is, write very carefully, 1/2 minus 1/2, 1/2 minus 4 3 minus 1, 5/2 minus 3/2 and 1/2, implies that A inverse will be equals to 1/2 minus 1/2, 1/2, second row minus 4 3 minus 1, 5/2 minus 3/2 and 1/2. So in this way we can find the inverse of any given square matrix using basic elementary operations. So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. Jai Ho.